अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व सम एग्जांपल्स, बट इसमें हम यूज करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन को व्हिच वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द लाइट बोर्ड। Now example number 2.10, which is a car traveling at 10 meter per second accelerates uniformly at 2 meter per second square. Calculate its velocity after 5 seconds. तो एक कार जो कि ट्रैवल कर रही है 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ और वो एक्सेलरेट कर रही है यूनिफॉर्मली विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपने उसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है आफ्टर 5 सेकंड्स, दैट मींस द फाइनल वेलोसिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा नोट डाउन कर लेते हैं एज वी हैव the initial velocity which is 10 meter per second. So vi that is equals to 10 meter per second, and we have acceleration a which is 2 meter per second square, and we have time which is 5 seconds. So time t that is equals to 5 seconds, and we have to find the final velocity which is vf that is equals to question mark. Now we know according to first equation of motion which is Vf is equals to Vi plus At. So you have to mention that according to first equation of motion which is Vf is equals to Vi plus At. Just we have to put the values in it. So Vf is equals to Vi which is 10 plus A 2 and time is 5 seconds. So 10 plus 2 5s are 10. So 10 plus 10 it becomes 20 meter per second. Clear? And meter per second is the unit of the velocity, and the final velocity is 20 meter per second. Clear? Now example number 2.11, and the statement is a train slows down from 80 km per hour with a uniform retardation of 2 meter per second square. So how long will it take to attain a speed of 20 किलोमीटर पर आवर? So एक ट्रेन जो है वो स्लो डाउन हो रही है 80 किलोमीटर पर आवर से 20 किलोमीटर पर आवर तक. So 80 किलोमीटर that means the initial velocity and 20 किलोमीटर पर आवर that means the final velocity. और यहाँ पर जो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का. That means ये जो एक्सेलरेशन है ये आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन है. That is shows by retardation. So retardation shows that this is a negative acceleration. So आपने बेसिकली फाइंड करना है कि आपको कितना टाइम लगेगा उस स्पीड को 80 किलोमीटर पर आवर से रिड्यूस करके 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक लाने में. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा नोट डाउन कर लेते हैं एज वी हैव द इनिशियल वेलोसिटी vi and that is 80 किलोमीटर पर आवर. सो अब यहाँ पर जो वेलोसिटी का यूनिट है वो है किलोमीटर पर आवर. तो स्टैंडर्ड यूनिट होता है मीटर पर सेकंड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में. तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ पर किलो को खत्म करेंगे और किलो प्रीफिक्स का मल्टीप्लायर होता है 10 raised to the power 3, दैट मींस 1000. यहाँ पर रह जाएगा मीटर पर आवर. तो 1 आवर में होते हैं 60 मिनट्स और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड्स. तो हम 1 आवर में 60 मिनट्स, 1 मिनट में 60 सेकंड्स. तो इस तरह से ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा. जो आपके यहाँ पे और था वो कन्वर्ट हो गया सेकंड्स में. अब इस सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से और सॉल्व करने के बाद आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 22.2 मीटर पर सेकंड. Clear? Similarly, we have the final velocity Vf
and that is 20 किलोमीटर पर और तो अगेन इसको भी आप कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में विच इज मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 20 इंटू किलो की जगह आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय पर आवर है तो 1 आवर में 60 मिनट्स और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स। अब फर्दर इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5.6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? इस तरह से हमने वेलोसिटीज को कन्वर्ट कर लिया मीटर पर सेकेंड में। नाउ वी हैव एक्सेलरेशन एंड दिस इज रिटार्डेशन, दैट मींस कि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, सो a इज इक्वल्स टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड वी हैव टू फाइंड टाइम t, that is equals to question mark. Now we know according to first equation of motion, so according to first equation of motion, according to first equation of motion, which is Vf is equals to Vi plus At, Vf is equals to Vi plus At. Now as we have to find time t, तो first of all आपको इसको सेपरेट करना होगा। सेपरेट करने के लिए हम Vi को यहाँ पर लाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, so Vf minus Vi that is equals to At. अब अगेन आपने टाइम फाइंड करना है, तो a यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर यहाँ पर आके ये a सब डिवाइड हो जाएगा। सो हम कह सकते हैं कि Vf minus Vi over a that is equals to time t. Just we have to put the values in it. So time t that is equals to Vf minus Vi, तो Vf है आपके पास 5.6 और आपके पास Vi है 22.2 डिवाइड बाय टाइम है आपके पास, सॉरी एक्सेलरेशन है आपके पास -2। तो फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा 8.3 seconds. So this is the time required to reduce the speed from 80 km per hour to 20 km per hour. Clear? Example number 2.12, and the statement is a bicycle accelerates at 1 meter per second square from an initial velocity of 4 meter per second for 10 seconds. So find the distance moved by it during this interval of time. एक बाइसाइकिल जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड एंड फॉर 10 सेकंड्स। सो आपने फाइंड करना है कि वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा इस टाइम इंटरवल में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा नोट डाउन कर लेते हैं एज वी हैव द एक्सेलरेशन a which is 1 meter per second square. So a is equals to 1 meter per second square and we have the velocity initial, so Vi which is 4 meter per second and we have time t which is 10 seconds and we have to find the distance moved, that is equals to question mark. Now we know the second equation of motion which is S is equals to Vit plus 1 over 2 At square. Now just we have to put the values in it. So S is equals to Vi which is 4 into time is 10 seconds plus 1 by 2. Acceleration A is 1 meter per second square and time t is 10 seconds. तो इसका स्क्वायर आ जाएगा as it is, because यहाँ पर t का स्क्वायर है तो यहाँ भी t का स्क्वायर आ जाएगा। So 4 into 10 it becomes 40 plus 1 by 2 और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100. So 2 ones are 2 50s are 100. तो यहाँ पर आ जाएगा 40 plus 50 and 40 plus 50 it becomes 90 meter. So the distance moved by the bicycle 90 meter in 10 seconds. Clear?
Example number 2.13, and the statement is a car travels with a velocity of 5 meter per second. It then accelerates uniformly and travels a distance of 50 meter. If the velocity reach is 15 meter per second, find the acceleration and the time to travel this distance. So again यहाँ पर भी हमें velocity given है, initial velocity which is 5 meter per second. तो साथ साथ हम डाटा नोट कर लेते हैं. कार जो है वो ट्रैवल कर रही है 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ vi which is equals to 5 मीटर और it then accelerates and travel a distance of 15 मीटर. तो वो फर्दर ट्रैवल करती है डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर. सो s is equals to 50 मीटर. अगर उसकी वेलोसिटी जो है वो 15 मीटर पर सेकंड तक पहुंच जाए, सो vf which is 15 meter per second, then find the acceleration and the time. तो आपने acceleration भी find करना है और आपने time भी find करना है उस distance को travel करने के लिए. So we have to find acceleration and we have to find time. Now to find acceleration we use third equation of motion which is 2as is equals to vf square minus vi square. Just we have to put the values in it. 2as है 50 मीटर into vf है 15 स्क्वायर, बिकॉज vf is 15 और vf का स्क्वायर है तो 15 का भी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस vi is 5, तो vi का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा. 2 into 50 it becomes 100a, 15 का स्क्वायर it becomes 225 and 5 square is 25. So 225 minus 25 it becomes 200 और यहाँ पर आ जाएगा 100a. 100a से मल्टीप्लाई हो रहा है तो फर्दर वहां पर जाके डिवाइड हो जाएगा. So a is equals to 200 divided by 100. 100 ones are 100 twos are 200. So acceleration is equals to 2 meter per second square. So the acceleration is 2 meter per second square. This is the first quantity which we have to find. Now to find time t, we use the first equation of motion which is vf is equals to vi plus at. Now just we have to put the values in it. So as we have to find time t, तो यहाँ पर हम values put करते हैं. vf is 15, vi is 5 plus acceleration which is 2 and time which we have to calculate. 5 यहाँ पर ऐड हो रहा है, फर्दर यहाँ पर आके ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2t. 15 minus 5 it becomes 10 and that is equals to 2t. 2t से मल्टीप्लाई हो रहा है तो फर्दर यहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा and that is equals to time t. So 2 ones are 2 and 2 fives are 10. So time is equals to 5 seconds. Clear? So the time is 5 seconds. In this numerical, we have find acceleration and time t. And the acceleration is 2 meter per second square that is required to travel the distance, and this distance covered in 5 seconds. You understand these examples very well, so wish you all the best. Take care. See you in the next lecture. Allah Hafiz.